और अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त तुर्की में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Difficulties, and as they say, when the going is tough, I have amended this quote, then the tough gets tougher. So I think this is what we should be doing today. We had a great get-together last night where we had very frank discussion, and obviously I'm not going to repeat what I said last night. Suffice it to say that we are here to convey this message to our Turkish brothers and sisters. President Tayyip Erdogan and his team, and to Turkish business community, that we genuinely and seriously want to work with you, not only to further strengthen our brotherly relations that has taken care of itself from centuries. What is very important at this point in time is to transform this brotherhood and fraternity into promoting our trade, investment, and cultural relations. And it's not difficult. That even though we don't speak the same language, but we come from the same religion. Even if we don't understand Turkish or Urdu extensively, but we come from the same culture, and we have shared history, and we have been partner with each other, supporting each other through thick and thin. And it is a matter of record that in contemporary history, I have received hundreds of Turkish businessmen from 2008 to 2018, and also your active participation in investments in Pakistan is highly appreciated. And above all, your contribution in humanitarian projects in Pakistan is very well known. I said this last night, and even at the cost of repetition, that the entire population of Pakistan witnessed your great efforts during earthquake, during floods, led by my brother, Excellency President Tayyip Erdogan himself and the First Lady. Today, we are here to seriously engage ourselves with you because you are very serious-minded business people and your achievements are outstanding. It's a shining example for all of us. I wouldn't want to take more time because we are going to listen to you today. But let's do 3, 4, 5 things so that we are able to achieve our targets. Pakistan has a buoyant automotive industry, and yours is far superior, no doubt about it. But then it's a question of competition.
And in order to promote our sales, not only between two countries, to third countries, let's collaborate and cooperate. For example, in your automobile industry, as I said, your quality is second to none. You are exporting to Europe, so those standards have to be met. But what we can do is, through mutual agreements, manufacture parts and components of automobiles at lower cost, because your labor is very expensive. Ours is still comparatively cheaper. So we can have this wonderful win-win collaboration in this automobile industry. And then, of course, you produce your own grain and you are self-sufficient in wheat, we know that. But your textile industry is again, very strong. Pakistan textile industry is also, very rich in experience, and we have, great giants sitting here on the right side who are leaders of textile. So again, there can be, space and gaps to be filled by joint cooperation in textile, for example. Without going into details, this is again a win-win, collaboration between two brotherly countries. And then you are far ahead of Pakistan. In fact, you are one of the world's leading country in building dams, hydel power generation projects, and then renewable energy. We discussed Zolo last night. So your capacity to build dams and hydel power generation should be leveraged by us in Pakistan. So you will invest money, get profits, and we get cheap hydel power electricity. This is a great vision which we must, actualize through joint discussion and quick decision. Similarly, in renewable energy, we have great potential in Sindh, in Balochistan, in KP, and in Punjab. Like wind power generation, already Turkish companies, as I speak, we know, are already active in Pakistan, in Sindh, in Punjab. And let's promote this, solar energy and wind power for two reasons. A developing country like Pakistan cannot afford prohibitive bill of billions of dollars to finance our very expensive oil and gas and other related items. We cannot. So we have to replace our import of raw material by, enlarging the scope of hydel power generation and renewable energy. And this is, a wonderful combination. Great investors are sitting here on my left, experts and experiences with you. Please come to Pakistan, and all our cascade from Dayamir Bhasha down to Tarbela Dam and Mangla is full of potential of 40,000 megawatts. 40,000 megawatts. And this will have two wonderful impacts. That it will control flash flooding. It will definitely be very helpful, because once you have such floods, it is devastating, and we've seen in 2010. And two,
exploit these great potential points and convert them into energy. So, how to go about? These are a matter of details. This late morning, I am just trying to, elaborate broad parameters of our future cooperation, which must be kick-started before I finish my humble, comments. And 3, you will have profits, and we will have these great advantages, including, restricting desiltation process through this investments from north to south. So I think these are some broad areas where our cooperation can be very, very productive and profitable. Yesterday I met this young gentleman from Zulu. He is now bearded. I took some 20 seconds to recognize him, and so he's here. And they have been very keen. They have invested in sand and in wind power, and they were very keen to invest in solar. Finally, this moment has come, and all hurdles have been cleared. So what I'm saying is that these are milestones to be achieved. Only then will this have a semblance of reflection of our brotherly relations, which are very genuine. They're not artificial. I mean, a taxi driver here in Ankara or in Istanbul or in Lahore, in Karachi or Peshawar or Quetta, I mean, once he knows that a Turk brother is sitting in his taxi, he will say, I will not charge you, as they would not charge in Istanbul or in Ankara. Or when somebody is sipping coffee in a Turkish coffee shop, once he is known that he is from Pakistan, they will say, thank you, you are a brother, Kardesh. So I think this is what the spirit is all about. And it is not from today or yesterday, it is from centuries, my brothers and sisters. So I am here today with my great team, on left and right, and of course on this right side, on the left side, to convey this message to you in no uncertain terms, and absolutely, loud and clear, that I will be, along with my colleagues, we will be, welcoming you with both arms to come and invest in Pakistan, promote trade, and through innovative measures, through modern technology and modern skills. We have a very young population. 60% of our population, span from 15 years to 30 years, and it is a big challenge. But according to this Chinese time-tested quote, a challenge has always with it, opportunities. So, this young generation in Pakistan, boys and girls, we can, and I offer this, great, opportunity here, that let's train them with modern skills and technology, IT-led technology, so that they are empowered, and then they become great, leaders of Pakistan. And today, I'm telling you that our neighboring country, India, their IT field exports something like $200 billion worth IT products, and ours is just $1.5 billion. It's a shame. So I think this is again a great opportunity for us to collaborate, and we have now a sizable base of IT knowledge in Pakistan, but this needs to be further multiplied manyfold. So this is again a great area of cooperation. Similarly, agriculture, dairy farming, I know a project is coming up in Lahore through joint venture. Mia Mancha, I think he's putting up a
dairy farm with Turkish, collaboration. So all this is very well, very good. But then it is not enough. Rather, it's very, it's insufficient and does not reflect our brotherly relations. So let's resolve today. I've requested my brother, Trade Minister, that before we conclude this meeting, we must sign a letter of intent that yes, through our untiring efforts, we shall achieve a bilateral trade figure of $5 billion in 2 years to come. Difficult, but not impossible. Nothing is impossible in this world, provided we have the will to do. Honorable Foreign Minister has reminded me of this visa issue, and I want to tell you, categorically that we will, inshallah, resolve this issue, and visa will not be an obstacle. Rather, we will have this visa turn into visa where we all earn and spend. So let's do this in a manner which is befitting and mutually beneficial. At the end, I'd like to quote Iqbal's part of his stanza, which is very relevant in this day and age for both of our countries. जहाने ताज़ा की है अफ़कारे ताज़ा से नमूद, जहाने ताज़ा की है अफ़कारे ताज़ा से नमूद, के संग व खिच से होते नहीं जहां पैदा, कि संग व खिच से होते नहीं जहां पैदा. कि modern societies, innovative world and progressive societies, prosperous societies are not built through building palatial buildings and houses. If palatial houses were to be the hallmark of modern societies, then let me confess and admit we have such fantastic buildings in Islamabad and Lahore and Karachi and Quetta and Peshawar. But that's not how modern societies are built. Iqbal says कि संगो खिच से होते नहीं जहां पैदा. Through marble and brick and mortar you can't build modern societies. It is only through innovation, through modern techniques, through knowledge, through hard work, through untiring efforts, through sacrifice, which you have done and which we must do. And together we will, inshallah, achieve our position in the community of nations. Thank you very much. Allah bless you. And Turkey, Pakistan, dosti zindabad. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्की पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की तकरीब से खिताब कर रहे थे. उन्होंने कहा, बिजनेस फोरम से खिताब मेरे लिए एजाज की बात है. पूरी दुनिया को कोरोना और यूक्रेन रूस जंग से माशी मुश्किलात का सामना है. मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का. खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं. आपको बताएं, कराची की जेल चौरंगी के करीब निजी मार्ट में आग भड़क उठी है. फायर ब्रिगेड की मुतअद्दिद गाड़ियां हैं जो कि आग बुझाने में मसरूफ है. रेस्क्यू टीमें और अमले की जानिब से लोगों को बाहर निकालने का सिलसिला जारी है. अहम खबर, कराची की जेल चौरंगी के करीब निजी मार्ट में आग भड़क उठी है. मनाजिर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं. फायर ब्रिगेड की मुतअद्दिद गाड़ियां हैं जो कि आग बुझाने में मसरूफ हैं और धुआं जो है वो तमाम इलाके को उसने घेरा हुआ है. बुरे तरीके से यहाँ पर आग लगी है. तीसरे दर्जे की आग करार दिया जा रहा है कराची का ये इलाका जेल चौरंगी, जहाँ निजी मार्ट में आग लगी है. और फायर ब्रिगेड की मुतअद्दिद गाड़ियाँ जो कि आग बुझाने में मसरूफ हैं. फायर ब्रिगेड के जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं वो भी वहाँ पर आग बुझाने की कार्रवाइयों में मसरूफ हैं. इसी बारे में मजीद अपडेट्स लेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन बदियुज़्ज़मान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं. बदियुज़्ज़मान, बताइएगा इस मार्ट में आग भड़कने की क्या वजूहात है, इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? बिल्कुल ऐसा ही है कि मुकामी ये स्टोर है और जेल चौरंगी पर वाक़या, और यहाँ पर आस पास में न सिर्फ स्पोर्ट कम्प्लेक्स है बल्कि बहुत सारे स्कूल भी हैं. अचानक यहाँ पर आग जो है वो लगी है और आग की वजूहात अभी तक सामने नहीं आ सकी. इस वक्त फायर ब्रिगेड की तकरीबन 8 से 9 गाड़ियाँ जो है वो मौके पर मौजूद है और यहाँ पर पुलिस, रेंजर्स और दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं वहाँ पर पहुँच के आग बुझाने की कोशिश की जा रही है. बड़ा
सुपर स्टोर 3 से 4 फ्लोर है। उसके अलावा इनका जो वेयर हाउस है वहां पर भी काफी जो है वो सामान रखा होता है। तो बहुत बड़ी आग है और यहाँ पर अब से कुछ देर पहले एसी जो है वो वहाँ पर आसमा वो वहाँ पर पहुंची है। जी चुरंगी के करीब जो वाटर बोर्ड के हाइड्रेंट है उस पर भी अब इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। फोकल पर्सन आइडेंट ईस्ट और फायर ब्रिगेड हुकाम से रास्ते में है और उसके अलावा पानी से भरे मुताबिक टैंकर जो हादसे के मुकाम पर रवाना किए गए हैं ताकि आग को जल्दी काबू पाया जा सके। फोकल पर्सन हाइडेंट सील को ऑपरेशन की निगरानी करने की हिदायत की गई है। इसके अलावा आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की बिला मुआवजा जो है पानी की फराहमी जारी रहेगी जब तक ये आग नहीं बुझ जाती। ये वाटर बोर्ड इंतजामिया ने जो है खास तौर पर कहा है और यहाँ जितने भी सिक्योरिटी इदारे रेस्क्यू टीमें वहाँ पर मौजूद हैं और आग बुझाने की भरपूर कोशिश की जा रही है और जेल चुरंगी आने वाले तमाम रास्ते जो है। बहुत शुक्रिया बदियुज़्ज़मान, आपने हमें अपडेट किया। और अब शामिल करेंगे अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक फैसले करता है। कमीशन अपने फैसले बिला खौफ करता है और करता रहेगा। फैसलों से कोई नाराज या राजी होता है या ये उनका मसला है। सहाफ़ी से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए हमेशा तैयार है। नए इंतखाबात का फैसला हुकूमत ने करना है। इलेक्शन कमीशन का काम साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात का इनेकाद है। हल्का बंदियों पर तेजी से काम जारी है। फौरन फंडिंग पर समाअत जारी है। फरीकैन को सफाई का मौका देना जरूरी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक फैसले करता है। अरकान की तादाद पूरी होते ही इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ममनुआ फंडिंग के अहम केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन मामले को मजीद इल्तवा का शिकार नहीं करेगा। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि दानिस्ता मामला लटकाया जा रहा है। कल तक बताएं दलाइल मुकम्मल करने में मजीद कितना वक्त लगेगा। पीटीआई के फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने दलाइल में कहा कि स्टेट बैंक की जानिब से बताए गए 11 अकाउंट्स का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। कुछ अकाउंट्स में कोई फंडिंग भेजी या वसूल नहीं हुई। मेंबर निसार दुरानी ने सवाल किया, आप मान रहे हैं अकाउंट्स पीटीआई के ही हैं? फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने कहा, हमने अपने एतराज़ात स्क्रूटनी कमेटी में जमा कराए। जब इन अकाउंट्स का पता चला तो पीटीआई सेंट्रल फाइनेंस ने इनको बंद कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि कुछ अकाउंट्स पीटीआई के इल्म में ही नहीं थे जिसे तस्लीम किया। फंडिंग में बदइंतजामी को भी पीटीआई की जानिब से तस्लीम किया गया। कमीशन ने समाअत कल 12:30 बजे तक मुलतवी कर दी। एक और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के मामले में गुज़श्ता हुकूमत की तरमीम बातियों नजर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं थी। मौजूदा हुकूमत की तरमीम में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का वोट का हक खत्म नहीं किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहम रिमार्क्स सामने आ गए। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट के तरीक़ाकार में तब्दीली के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुज़िश्ता हुकूमत ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया। मौजूदा हुकूमत की जानिब से की गई नई तरमीम के खिलाफ आइन है, जिस पर चीफ जस्टिस असर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि किसी भी कानून में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम नहीं किया गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का तरीक़ाकार बहुत पेचीदा मसला है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी एक हल्के में वोट डालेंगे। उनका कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का तरीक़ाकार इदारों ने तय करना है, अदालत ने नहीं। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर मजीद दलाइल तलब करते हुए समाअत 3 जून तक मुलतवी कर दी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ वेलकम बैक। महंगाई ने अवाम के होश उड़ा दिए। तेल और घी की फी किलो कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। यूटिलिटी स्टोर्स पर तेल और घी की कीमत 100 से 150 रुपए बढ़ गई है। मुख्तलिफ कंपनीज के मनमाने दाम से आवाम शदीद परेशान नजर आए हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे। हमजा गिलानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। हमजा गिलानी, आप हसन स्क्वायर के करीब वाक़ यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद है, बताइएगा क्या सूरत हाल है महंगाई की? तेल और घी की फी किलो कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। इस वक्त मैं यूटिलिटी स्टोर पे मौजूद हूँ जो गुलशन इकबाल में वाक़ है। यहाँ पर लोगों की लंबी कतारें हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे कैमरा में नवेद आपको दिखाएंगे कि यूटिलिटी स्टोर के जो काउंटर खवातीन की अलग लाइन है, मर्दों की अलग लाइन है। महंगाई की वजह से हर शख्स इंतहाई परेशान है। यहाँ पर
भी लोग सस्ती चीज़ें खरीदने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि तेल की और घी की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। इस्लामाबाद यूटिलिटी कॉरपोरेशन की जानिब से एलामिया जारी किया गया था कि तेल और घी की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। 1 लीटर पाउच के ऊपर जो है मुख्तलिफ कंपनीज ने 100 रुपये और बास कंपनीज ने 120 रुपये का इजाफा किया है, जिसके बाद 1 लीटर का जो पाउच है वो 585, 590 और बास का 605 और 600 रुपये पे फरोख्त हो रहा है। मुख्तलिफ कंपनीज के मुख्तलिफ रेट्स हैं। यहाँ पर लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना, उनका ये कहना है कि जब रात को सोते हैं तो रेट कुछ होते हैं और जब सुबह उठते हैं तो रेट कुछ हो जाते हैं। यूटिलिटी स्टोर पर जब तेल महंगा हुआ है खाना पकाने का, तो बाहर दुकानों पर जब हम जा रहे हैं तो वहाँ पर जो तेल है वो इससे भी ज़्यादा महंगा है, जबकि खुला तेल जो है उस हवाले से भी ताजिरों ने एहतजाज का रिकॉर्ड कराया है। खुला तेल जो है वो बेचने पे पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसकी वजह से खुला तेल जो है वो मार्केट में नहीं बिक रहा है। एक मुतवस्सित और गरीब आदमी को भी इस हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर जो है वो आटा दस्याब नहीं है, कह रहे हैं कि आटा जो है वो अभी कुछ देर के बाद आएगा, जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये स्कीम के तहत आटे को जो है वो सस्ते आटा फराम करने का ऐलान किया था। 400 रुपये का जो आटा है वो 10 किलो के। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा गिलानी तफसीली अपडेट करने के लिए। रुक करेंगे लाहौर का, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए हैं। यूटिलिटी स्टोर से आटा, चीनी, घी और तेल ही गायब हो गया है। दूसरी जानिब खुर्दनी तेल और घी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। इस वक्त लाहौर में हमारे नुमाइंदा एजाज शेख गार्डन टाउन के यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। एजाज शेख, बताइएगा कि यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का क्या कहना है, अशिया ज़रूरिया कब तक मुयसर होंगी आवाम को? बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की तरफ से रिलीफ पैकेज देने के बावजूद जो महंगाई का जीन है वो ताहाल काबू है। वो जीन अभी भी बोतल में बंद नहीं किया जा सका। अगर आटे की बात कर ली जाए, कहा तो ये जा रहा है कि आटे में बहुत ज़्यादा रिलीफ दे दिया गया है, लेकिन रिलीफ देने के बावजूद अगर यूटिलिटी स्टोर की बात कर ली जाए तो वहाँ पर आटा बिल्कुल नायाब है। दुकानों पे मिल रहा है, चक्कियों पे मिल रहा है, लेकिन उसी रेट पर जिस तरह के पीटीआई की गवर्नमेंट के दौर में मिल रहा था। यहाँ पर हमारी जो सार्फिन से बात हुई, उन्होंने ज़बरदस्त एहतजाज किया है और उनका ये कहना था, बड़े अफसोस की बात है कि शहबाज शरीफ दूसरे सूबों में जाकर कहते हैं कि मैं कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा, लेकिन अपने सूबे का ये हाल है कि यूटिलिटी स्टोरों पर भी आटा नायाब हो चुका है। इसी तरह अगर घी की बात कर ली जाए तो घी भी जो ब्रांडेड घी है उसमें फी किलोग्राम 100 रुपये इजाफा हो चुका है। बहुत शुक्रिया एजाज शेख, आपने हमें लाहौर से अपडेट किया। और अब रुख करेंगे मुल्तान का। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी महंगाई का तूफान थम न सका। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और तेल की कीमतें कंट्रोल से बाहर हो गई। बिल्कुल, और घी की कीमत में 208 और ऑयल की कीमत में 218 रुपए का इजाफा सुनकर तो आवाम के होश ही उड़ गए। हमारे नुमाइंदे हैदर अब्बास से बात करेंगे, जो कि इस वक्त MDA चौक के यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद है। हैदर अब्बास, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मुल्तान में महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही। आए रोज जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। आज जो है एक और यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है घी और ऑयल की कीमतों में इजाफे के बाद आवाम पर एक और महंगाई बम जो है वो गिरा दिया गया है। इस वक्त घी की जो कीमत है वो तकरीबन 208 रुपये इजाफा किया गया है। इसी तरह जो ऑयल है उसकी कीमत में 213 रुपये इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब सब्सिडी पर जो अशिया हैं वो दस्तयाब नहीं है और शहरियों की लंबी लंबी कतारें जो है गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लगी हुई हैं। ख़वातीन हों चाहे मर्द हों, सारे गर्मी में जो है लाइन में बनाकर यहाँ खड़े हुए हैं और अंदर जाने की जो है वो इजाज़त नहीं दी जा रही है। और दूसरी जानिब जो शनाख्ती कार्ड सिस्टम शुरू किया गया है उससे भी शहरी जो है वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि मैसेज आने में टाइम लगता है और अगर मैसेज ना आए तो सब्सिडी वाली अशिया जो है वो नहीं मिलती हैं। इस हवाले से जो यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरी आए हुए हैं उनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि दोबारा से निज़ाम जो है पुराने वाला ही कर दे तो बेहतर है, क्योंकि इस मैसेज के इंतज़ार में जो है चीज़ें नहीं मिलती हैं और दूसरी जानिब घंटों घंटों जो है यहाँ लाइनों में लगना पड़ता है। और जो महंगा किया गया है ऑयल की, आवाम महंगाई से परेशान है। बहुत शुक्रिया हैदराबाद तफसीलात से आगाह करने के लिए। पेशावर से अहम खबर दें। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी तरक्याती इदारा है या सफेद हाथी? PDA में 14 अरब 83 करोड़ रुपए की संगीन बेकायदगियों और बेजाब्तगियों का इंकिशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट सामने आ गई।
मंजूरी नजर अफराद को तरक्याती कामों के ठेकों की बंदर बांट से खजाने को 1 अरब से जायद का नुकसान पहुंचाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक शाहराहों की तामीर पर 1 अरब 26 करोड़ 60 लाख रुपए इजाफी खर्च किए गए हैं। अपलिफ्ट प्रोग्राम पर 1 अरब 15 करोड़ रुपए इजाफी दिए गए हैं। इसके अलावा पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2 अरब 73 करोड़ 10 लाख रुपए के बिला जवाज अखराजात किए हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन की कंसल्टेंट की खिदमात हासिल करने पर भी खजाने को 1 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। अल्लाह के बाद इस मुल्क की हकीकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर आ गई। इम्पोर्टेड हुक्मरान अपने केसेस पर फर्दे जुर्म आयद नहीं होने दे रहे। वो कभी मुल्क से बाहर कभी दूसरे शहर चले जाते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। अपने ट्वीट में लिखा कि FIA, ANF और नैब शदीद तरीन दबाव में आ गई है। घी में 200 रुपए फी किलो का एक दिन में इजाफा जुल्म असीम है। जो महंगाई खत्म करने का नारा लगाते थे उन्होंने गरीब को ही खत्म कर दिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने से मुतालिक दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने कहा कि असेंबली में लोटे लेकर जाना शर्मनाक अमल था। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के वकील अली जफर ने कहा कि हमजा शहबाज को अक्सरियत साबित करने के लिए एतमाद का वोट लेना जरूरी है। ये मामला दोबारा इलेक्शन की तरफ ही जाएगा। जो ज्यादा वोट लेगा वही वज़ीर आला बनेगा। स्पीकर के फैसलों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अदालतें पार्लिमानी मामलात और फैसलों में मदाखलत नहीं कर सकती। वज़ीर आला के इलेक्शन के वक्त स्पीकर ने आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल किया। अदालतें उस वक्त मदाखलत कर सकती हैं जब स्पीकर के इक़दाम में बदनीयती हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का इतलाक मुस्तकबिल और ज़ेर समाअत केसेस पर भी होता है। अदालत ने फरीकैन के वकला से दलाइल तलब करते हुए समाअत 6 जून तक मुलतवी कर दी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रखिए। नेस्ले मिल्क पैक क्रीम अब हर दिन खुशी से आसानी की महज़त, बिलीव मी इट वर्क्स। आसानी करो अपनी आवाज को सुपर फॉर चेंज। एक स्टेटस लगाने से क्या हो जाएगा? एक 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 लेकिन हम जिसको एक एक आवाज समझते हैं वो अलग अलग नहीं बल्कि एक ही आवाज है। तो करो अपनी आवाज को सुपर फॉर चेंज। आवाज उठाओ! सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज सुपर 4G। यार क्या मौसम है तो चाय पियोगे? ऐसे मौसम में नहीं कह सकता हूँ। हाँ पिक कर ले यार। अच्छा हाँ ठीक है। उठा लो। आपके हाथ की खास चाय कैसे छोड़ सकते? समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ एवरीडे। अब आया नया सेरेलैक एसेंशियल्स, बनाए सिर्फ दूध में। आयरन और जिंक की ग़िज़ाइयत एक साथ सिर्फ 15 रुपए में। करो अपनी आवाज को सुपर फॉर चेंज। आसानी की महज़त, बिलीव मी इट वर्क्स। आसानी नेस्ले मिल्क पैक क्रीम अब हर दिन खुशी से। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि मुल्क में लोड शेडिंग का अजाब कम ना हो सका। शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट तक पहुंच गया है। तलब और औसत में बढ़ता फर्क तवानाई के बहरान को मजीद बढ़ा रहा है। इसी वजह से शहरी इलाकों में 7 से 9 और देही इलाकों में 12-12 घंटों की लोड शेडिंग जारी है। मजीद इसी बारे में जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़1 राहील हसन से। राहील हसन, बताइएगा कि लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है और आवाम का क्या कहना है? जी, इस वक्त मुल्क में शदीद गर्मी की लहर है और साथ साथ लोड शेडिंग भी बदतरीन सूरत हाल में जारी है। जो लोड शेडिंग आज जो बिजली का शॉर्टफॉल है वो तकरीबन 6,500 मेगावाट तक पहुंच चुका है और बिजली की जो तलब है आज वो 26,000 मेगावाट, जबकि बिजली की कुल पैदावार 19,500 मेगावाट आज की डेट में की जा रही है। हमने अपने नाजरीन से एक स्टोरी भी शेयर
शेयर की थी कि कौन कौन से बिजली घर हैं जो कि तकनीकी ख़राबी और ईंधन की फराहमी के बायस जो है वो ईंधन की अदम फराहमी के बायस बंद हैं और बिजली की सप्लाई जो है वो तातुल का शिकार है। इसी वजह से जो शॉर्टफॉल है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बाज़ ऐसे पावर प्लांट्स हैं जिनमें ईंधन फराहमी के बावजूद चंद ऐसी तकनीकी ख़राबियाँ हैं जिसके बायस वो अपनी फुल पैदावार पर नहीं चल रहे हैं और हुकाम को जो है वो बिल आखिर लोड शेडिंग से गुजारा करना पड़ रहा है। जो मुल्क के छोटे बड़े शहर हैं उनमें तकरीबन 8 घंटे जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि जो देही इलाके हैं उसमें 10 से 12 घंटे जो है वो लोड शेडिंग का दौरानिया है और ज़्यादा लाइन लॉसेस वाले इलाकों में ये दौरानिया जो है वो बढ़ जाता है। अगर इस्लामाबाद की आइस्को रीजन की बात की जाए, गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। अपडेट कर रहे थे राहील हसन, बहुत शुक्रिया राहील। लाहौर हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को 1 हफ्ते में पेश करने का हुक्म दे दिया। सास और जेठ को हिरासत करने से मुतालिक केस की समाअत के दुआ ज़हरा के वकील राय खुरम का कहना था कि दुआ का उनके साथ आखिरी मरतबा राब्ता 19 मई को हुआ था। अदालत ऑर्डर फरमा दे, मीडिया पर केस रिपोर्ट नहीं होगा तो पेश होंगे। अदालत ने मीडिया को केस की रिपोर्टिंग से मना कर दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख की दरियाफ्त पर SHO का कहना था कि दुआ ज़हरा की लोकेशन आज़ाद कश्मीर की आ रही है। और अब बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की। तो मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी। मई के दौरान जाली और फर्जी मुकाबलों के दौरान 32 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के दौरान 26 अफराद गोलियां, आंसू गैस की शेलिंग और धमाकों में जख्मी भी हुए। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज ने मई के दौरान 92 अफराद को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया, जबकि 180 से ज़ायद तलाशी और मुहासरे की नाम नहाद कार्रवाइयाँ की गईं। इन कार्रवाइयों में 2 घरों को भी धमाकों से उड़ा दिया गया। और खेल के मैदान से आपको बताएं, पाकिस्तान और श्रीलंका वुमेन क्रिकेट टीम के दरमियान पहला वनडे मैच कराची के डिफेंस स्टेडियम में जारी। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए अब तक ऑल आउट 169 रन बनाए हैं और गुलाम फातिमा ने 3 और सादिया इकबाल ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है। हमारे नुमाइंदे बदिर जमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी बदिर जमान, अपडेट कीजिए। पाकिस्तान और श्रीलंकन वुमेन क्रिकेट टीम के दरमियान पहला वनडे मैच कराची के डिफेंस स्टेडियम में जारी। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 169 रन बनाए ऑल आउट पर और पाकिस्तान और श्रीलंकन वुमेन क्रिकेट टीम के दरमियान ये पहला वनडे मैच है जो कि कराची के डिफेंस स्टेडियम में खेला जा रहा है और इस वक्त तमाशाइयों की बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था और पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका ने 169 रन स्कोर किए हैं। 170 रन का टारगेट दिया है पाकिस्तान को जीत के लिए। पाकिस्तान और श्रीलंका वुमेन क्रिकेट टीम के दरमियान पहला वनडे मैच कराची के डिफेंस स्टेडियम में जारी। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और पाकिस्तान को 170 रन का हदफ दिया है जीत के लिए। श्रीलंका की टीम ने पाकिस्तान को 170 रन का हदफ दिया है जीत के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मारूफ अफसाना निगार और मुतरजम डॉक्टर आसिफ फरकी की दूसरी बरसी के मौके पर उनकी अदबी खिदमात को याद किया जा रहा है। 2010 में डॉक्टर आसिफ फरकी ने पाकिस्तान में अदबी मेलों का कल्चर मुतारिफ करवाया। जब हम उर्दू की अदबी और तहजीबी मीरास की तरफ आते हैं तब एहसास होता है कि हमने कितनी बड़ी चीज़ से मुंह मोड़ लिया। जब हम मीर और गालिब और इकबाल और फैज़ और अपने ज़माने के तक आते आते जॉन एलिया और ज़हरा निगाह और परवीन शाकिर तक आते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट newsone.tv। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए।